Afternoon, madam. Shall we start or should we wait for another 2-3 minutes more? Sir, you can start. A very good afternoon to everyone present here. Am I audible to everyone clearly? Yes, sir, you are audible. Good afternoon, respected Principal Madam, Dr. Pradnya Gyankar Ma'am, Principal Vidyabharti Mahavidyala Amravati, Professor Hemant Kumar Junala, In charge Principal Anjuman Islam's Akbar Peerbhoy College of Commerce and Economics, Professor Kirti Menghani, the IQAC Coordinator at Anjuman Islam's Akbar Peerbhoy College of Commerce and Economics, Professor Hanif Lakrawala, the Assistant Director for the Professional Courses at Anjuman Islam's Akbar Peerbhoy College, Professor Athar Iqbal, my own teacher, whom I admire a lot, HOD of Computer Science Department, Vidyabharti Mahavidyala Amravati, all the faculty members present here, and all my dear students. I, Professor Ehtesham Sheikh, welcome you all for this 2-day faculty exchange program between Anjuman Islam's Akbar Peerbhoy College of Commerce and Economics, Mumbai, affiliated to University of Mumbai, and Vidyabharti Mahavidyalaya, affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. The faculty exchange program provides the participant with an opportunity to learn from different settings and different subject matter experts, and it facilitates the cultural exchange between two institutional bodies. It facilitates to work with different settings. It also helps in making the diverse culture look uniform and unified. The faculty exchange program is one way to take advantage of benefits from the two different institutions, because every institution has its unique features and unique facilities that is provided to their own students. But since Sir, you are not audible. am I audible to everyone? Yes, sir, now audible. Yes, sir, now audible. Okay. So the faculty exchange program has an ultimate goal for the educational institution to develop a vibrant and diverse faculty. Faculty get the exposure for different culture, the study environment, and learn across the culture, the management, and the various specialities that other institutions are having. And this is very important in the era of globalization. The faculty exchange program presents a unique opportunity for interaction between the universities and the institutions. It will create a great bond among the concerned institution and will be a powerful resource utilization tool, because both the institutions are well equipped with teaching, learning, and other research related equipments and resources. These resources can be shared between the students, the faculty members, and between the universities. So it will help in developing the new teaching and learning pedagogy. So the incidence of faculty staff exchange program, both international and national, is the way Indian Higher Education Institute can ascertain and sustain the quality education. These programs are mutual inter-institutional arrangement
through which the proficiency and service of one institute's faculty are exchanged with other institutions. So as a part of this, today, the faculty members from Akbar Peerbhoy College of Commerce and Economics, Mumbai, will be conducting a session on the importance of academic project in building the career in IT. So the title is, the topic for today is academic project, a gateway to career in IT. It will be presented by myself, Professor Etisham Sheikh. I have done my BSc Computer Science from the very own institute which you belong, from Vidyabharti, Mahavidyla, AMRAVATI, and I was in the first batch of BSc Computer Science when it was started at Vidyabharti Mahavidyala. I owe a lot to my own alma mater, and therefore this program is very close to my heart. And therefore, I once again welcome all my dear students to this program. Another very distinguished faculty with me, having around 20 years of experience in teaching and especially in handling academic projects, Professor Shahid Parvez is with me. He has done his MCS, then MBA. He is also Microsoft Certified Technology Associate. We both have qualified the Microsoft certified certification in the same year 2016, and we are working with each other since 2011. Sir is also associated with several other colleges as a adjunct faculty or visiting faculty, which is very much popular in South Bombay, South Mumbai. So the visiting culture is very much common in Mumbai, whereas in Amravati we generally see that most of the colleges are having full-time faculties, and these the student mostly attend their colleges. And here in Mumbai we have several kind of associations where we try to exchange or arrange certain visits to multiple places. That's why a collaboration was much needed. I would rather suggest that you physically come to our college, visit Mumbai, and try to learn from this environment, from this uh, type of culture where students are very much associated with the industry and industry related technologies for developing their academic projects. Students are very much trying to get internship of around 1 month, 2 months, 3 months, and try to build some part or component of the project on their own. Sometimes we also feel that students are having so what we say is students really have so innovative idea that we sometimes try to uh, adjust them and accommodate them according to the university requirement, because there are certain projects made by the student which do not actually, they go beyond the university curriculum and aspect of the current setting. Therefore we need to accommodate them in the existing setup, because project is one way where student really can have a very excellent platform to transform their knowledge that they have gained throughout their academics into their skill set. What is most important is the skill set, the skill set that makes you valuable in the industry, because you as an individual doesn't have any identity in the industry except your skill set. You will be identified by your skill set. You will be identified by how much useful you are for an organization. If a company hires you, they must see profit in you, and they must have a faith that a person is not a liability on us. He should be an asset for an organization. So with this, I request Shai sir to share few words before we start our presentation. Okay, am I audible? Hello, am I audible, sir? Am I audible?
Yes, sir. Yes, sir, you Yes, are sir, audible. you are Please audible. continue. Okay, okay, okay. Thank you. So, thank you to Etesham sir and the for this faculty exchange program that Vidyabharti Mahavidyala Amravati, that Professor Rana okay, and some other faculties. Uh, I welcome to all the students who are joining here in this session, where they will really get a good opportunity regarding what is project and all. So before actually starting with the technical session, I thanks to all people who are here, and I just say to Etishant, please proceed so that we can start our technical session. Thank you, sir. So before we start our program, I would like to hear from some of the students from Vidyabharti Mahavidyalaya that what kind of project have you done in your TY level? And feel free to ask any question, because I am not an outsider for you. You are a very much my own students. So feel free to share your experience and your views about the project. Anything that comes to your mind first, or even SY students, those who are preparing for the next year project, they can also share their ideas. Okay, so first let us understand what is the importance of an academic project and why an academic project is important while learning other subjects. So I personally feel that an academic project is the gateway to a professional career, especially in IT, but in general also for management students, it provides a platform where students can transform their knowledge into useful and employable skills. We learn many things, but these things need to be woven in a single uh, thread and connected together and applied together, so that it must produce a collective effort. Why we like garden? Because we see a variety of flowers. We see a variety in colors. Then the beauty of garden is because of its variety. In the same way, students learn so many subjects, and apart from their subjects, they have some personal traits. These personal traits generally reflects their own interest. That if someone is very good in logic, he might be inclined towards programming languages. If someone knows how to manage things, he will be very much interested in using uh, softwares like ERP, enterprise resource planning, MIS, and other things. If someone knows how to play with hardware, he might be interested in uh, making his career in hardware networking. If someone really loves to play with uh, logic at a very far extent, so that he can able to make decisions out of those logics, then he will be very much interested in artificial intelligence. So these are the personality traits that also affects in selecting a career in IT. Selection of career depends upon your personal traits and the inclination towards a particular set of subjects. And therefore,
Project gives you a right platform where you can transform your area of interest, your subjects into a useful skill sets, where you try to derive a relationship between what you have learned in software engineering and what have you learned in programming languages. It is not like that doing a project in C sharp will not help you in, or the thing that you have learned while learning C++ will not help you in doing the project in C sharp. You do project in any language. Every single concept that you have studied during your entire academic year will be somewhere helpful in starting your project or managing your project, or somewhere troubleshooting will help you that how you have removed the errors from your small addition of two numbers program will also help you in identifying the bugs in a large software. It will also help you in identifying what kind of setup you require, what is the operational feasibility of a project, what is the economic feasibility of the project, whether this project is worth to make or not. That you will learn once you come to know about the actual requirements of the project. You have studied about how to gather the requirements, but practically you will learn how to gather the requirement and how to analyze the requirement with the help of a project. So why academic project? Academic project is one of the best platform that provides students where skills can be transformed into performances. You can come out with your performances. You are very good in logic. Where is the platform to perform? You are very good in database management system. You are very good in framing the problem statement into SQL queries. Where you will apply those knowledge, you need a practical platform. So before you go to the industry, before you go for your first job, you first need to understand how these projects are created, how you can be a part of a large project, what are the different aspects of these projects, how these projects are made and integrated together. So there is something called as unit testing, integration testing, and system testing. You have created a lot of units in terms of classes, functions, and other things in your uh, graduation studies. These subjects provide you a facility to write a program for performing one single task. But here you will find that all these things will be woven into a single thread, and we will be presenting a combination of our software engineering skill, our logical reasoning skill, our database management skill, our risk management skill, our ability to make a good bug-free software, and our ability to frame the business requirements into technical requirements. All these abilities will be getting a platform to present your entire skills that you have learned right from semester 1 to semester 6 in the form of academic project. And therefore, academic project, from my point of view, is one of the best platform for the students, where student can really come out with a freedom and they can really add wings to abroad a high and long journey in the dynamic field of IT. And here we need to understand what is a project, from where to start a project, and how to understand the small and the complex procedure that is required for building a project. Project is also important in developing professional skills.
because you are not alone, and you are not only working for an IT organization. You will working with people with different skill sets. You will be working with people in HR, marketing, business development. So IT, although it's a specialized industry, but IT or the IT engineers need to work with other peoples also. And therefore, you need to follow certain standards to make the IT projects that are based on industry good practices. What is happening around you? You need to continuously scan the environment, and you need to have an IT skill set management framework. You need to upgrade yourself according to, for example, you regularly update your mobile phones. You regularly update the software that you have installed in your mobile phones. The same way, you need to upgrade yourself. The skill set that you have acquired 3 years back won't be help you in next 5 years. Then IT professional need to develop profiles that must align to the IT operation model. So what is happening in the market? Your skill set need to be aligned. I can't say that I am very good in COBOL language. Once upon a time, I started with COBOL language. But today, if I write on my resume that I know COBOL language, nobody is going to give me a job. Why? Because my skill set need to be aligned with the market requirements. And therefore, you don't only need to be specialized in a single language or a database. You need to have a collection of skills. For example, you must understand how networks are established in order to make a client server application. You cannot make a chat based application without knowing the concept of threads. You cannot make a website without knowing the principles of web designing. You cannot make a mobile app without knowing the difference between a hybrid and a native app. You cannot make a website without knowing the architecture of microservices or service oriented architecture. Because how Amazon is working, or how oyo.com is working, it is using microservices. So these microservices can be implemented either using an in-house setup, or you can directly deploy on a cloud. So cloud is completely virtualization, operating system concepts, networking. So cloud is not a single concept. If you want to really learn cloud, you need to first understand the concept of operating systems. You need to learn the concept of uh, operating system, virtualization, then followed by networking. So these things you need to really understand, and then try to apply the combined set of skills to understand cloud. So whatever you are learning today, it requires multiple skill sets or the collection of skill sets that can help you in understanding that concept. Then people engagement is required, because you are not alone. You're not working in you cannot work in an isolated or a single or individual team. Or even if you build your own team, misfit is obvious. It is one of the principle of project management. That misfit is obvious. Even if you select the best players in India, तो इंडियन टीम कभी कभी परफॉर्मेंस देती है, और कभी ऐसा भी होता है कि 67 या 37 पे ऑल आउट हो जाती है. तो व्हाई वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर. उसके बाद भी आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस कभी कभी वीक हो जाता है. इंडिविजुअली इफ यू सी, टॉप टू बॉटम, every individual is top. ते काका थांबले तिथे. थांबा थांबा थांबा. थांबला चला. Thank for visit talent टाकायचं. Okay. So you need to understand the people's engagement,
the proactive communication, and listen to the concerns. Why? Because requirements will be completely taken in non-technical format. No one is giving you the requirements in technical form, because if they are so technically sound, then why will they outsource the project, or why will they make the project from you? You are required to transform the business requirement into technical requirements. The technology should not lead the business should lead the technology. And therefore, listening to the concern, and then job description analysis, understand the context, and identify the gaps, that what you have and what industry is demanding from you. When you will go for an interview, you will certainly come to know about the gaps that were between what you are expecting from the industry and what you actually face it. In the same way, when an interview sits with you, he also expects something from you, and you also expect something from the organization. Okay, I'll try to combine both. So जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, तो कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी होगी, कुछ एक्सपेक्टेशन एक कंपनी की होगी. कंपनी विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ गुड क्वालिटी वर्क फ्रॉम यू, और आपका एक एक्सपेक्टेशन होगा दैट यू अपार्ट फ्रॉम द सैलरी you need a good working environment, you need a platform where you can evolve yourself, you can develop your skill sets. आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखना चाहते हो, इसके लिए आप अपने लिए एक प्लान बनाते हो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एक रखते हो. So this will definitely help in your professional development. So project is the right platform where before going to the industry, before going to the interview, before going to the mock test, you can develop certain skill sets. आप जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था और कौन सी ईयर में पढ़ा था. लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट किया होगा, और प्रोजेक्ट में अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे, अगर आपने कहीं वेबसाइट पे पढ़ा होगा तो हो सकता है आप स्टेप भूल जाएंगे. लेकिन अगर आपने उसको आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है, तो आप लाइफ टाइम कभी भी उसको भूल नहीं पाओगे, और स्पॉन्टेनियस आपको आंसर याद आएगा. आपको सोचने के लिए वक्त नहीं लगेगा या टाइम नहीं लगेगा कि उसमें आपको कहाँ पढ़ा था, क्या स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1 भूल जाए तो कभी कभी होता है कि हम स्टेप नंबर 1 भूल जाते हैं, तो आगे का आंसर याद नहीं आता है. लेकिन जब आप कोई चीज प्रैक्टिकली करते हो, जैसे आपके घर जाने का रास्ता, अगर आप मोबाइल फोन पे एंगेज हो, फिर भी आप चलते चलते ना अपने घर ही पहुंचते हो. उसका रीजन क्या है कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी अगर आप चलोगे, तो आप अपने घर पे आराम से पहुंचोगे. ऐसे ही जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, और जब आपका स्किल सेट प्रोजेक्ट की वजह से डेवलप हुआ है, तो प्रोजेक्ट में किया हुआ काम आप कभी भी कैसे भी, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उसको करके पूछा जाए, या कितना भी उसको राउंड एंड राउंड उसको डिफिकल्ट करके आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए, तो भी आप उसमें से आंसर बड़े आसानी से ढूंढ कर निकाल सकते हो. ओवर टू यू शाहिद सर फॉर योर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. Yes, sir. Okay. Now am I audible now? Yes sir. Okay. So dear all students, as Prashant sir explained everything about, so first of all they explained something about what is academic project. So before really discussing with the academic project, I just want to all of you know that what is the project. So project, as you all are there in the college, you all are there in the final year, maybe you are, some of you are in second year. So the project is something what you are studying theoretically. So we need to implement it. Just I'm giving you an example. What happens when you are studying there in the first or second standard, your subject teacher, they are teaching you about what we can say, the different types of fruits, the different types of vegetables. Okay, so theoretically they are studying, they are teaching to all of you. Then later what the teachers are giving an assignment to the students to make a project, and what they are expecting, that you bring a chart from the shop,
Then if suppose there is an apple, so cut the apples ka photograph and stick on your we can say notebook, write, give the labels and write something about that fruit. If they are giving the assignment for what we can say vegetables, so they are studying theoretically about the different vegetables, and they are giving the assignment that is called as a project to the student, that bring a chart for that particular what we can say topic, that is vegetables. Cut the different vegetables, stick on your notebook, give the label. So we can say from childhood, from our first standard, what we all are doing the project. So as and when you grows up from first, second, third, and as and when you are moving to your higher studies, so we can say that project type changes, that project style changes. Now here, especially we are talking for the graduate peoples, you all IT students are there. So the project which you are making in your final year, it is nothing but the academic project. Now here in this case, what happens? The in your career for your final year, the university decided, the university finalized that the student has to make a project. Here, for making the project, you are acting a role for different people. Sir, please speaking in Hindi. I'm comfortable in हाँ, Hindi. ओके 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 ओके, आई विल ट्राई। सो अभी टीवाई के अंदर जो है तुम्हें जो प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बनाना होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपका इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ 11 12, तो वहाँ पे आपका फिजिक्स के अंदर टीचर कुछ थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। सो थ्रू दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग क्या थ्योरेटिकली पढ़ा है और वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। So here in this IT field also, you are studying different languages. बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको फ्रॉम द फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, बहुत सारे डेटाबेस के बारे में पढ़ाया जाता है। सो हाउ दिस ऑल लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, how these all databases are used for practical implementation, so how we all will get it। तो उसके लिए हम लोग को जो है यूनिवर्सिटी बोलता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो जब आप वो प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर आपको जो सारा जो आपने थ्योरेटिकली स्टडी किया हुआ है, all the languages, the different interfaces, the different we can say operating system, different we can say database and platform, वो सारी चीजों को मिला के we all are trying कि अपना एक प्रोजेक्ट बने। ओके, सो अब फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट एक्चुअली सर ने जैसे बता दिया कि इन आईटी इंडस्ट्री, सर ने बहुत कुछ आपको बताया कि व्हाट आर द आईटी स्किल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, आईटी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स क्या होता है, प्रोजेक्ट व्हाट वी कैन से मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है, लॉट्स ऑफ वी कैन से जॉब डेवलपमेंट एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, ये सारी चीज सर ने बताया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, then you are acting or you are working for different roles। सबसे पहले बात, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे रियली व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपको एक रोल दिया जाएगा कि यू एक्ट एज अ प्रोग्रामर। आपको इतना काम दिया जाएगा, वो आप प्रोग्रामिंग करना है। समटाइम यू एक्ट एज अ डिजाइनर, आपको डिजाइनिंग दिया जाएगा, आपको ये डिजाइन करना है। समटाइम यू आर वर्किंग on with databases, so a role is given there in industry where you have to work according। अगर आपको नहीं आता तो जब कंपनी जो है आपको ट्रेनिंग देगा, आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग हमें उस रोल पे और उस फील्ड में काम करना। बट फॉर मेकिंग एन एकेडमिक प्रोजेक्ट इन योर स्टूडेंट लाइफ, okay, where you students are not only working for a single role, where you are working for all multiple roles alone from yourself। तो ये जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ प्रोजेक्ट बनाना, वहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने में मिलेगी कि आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो सबसे पहली बात तो आपको सोचना होगा कि क्या बनाना है, कौन से टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है। okay, that you need to decide it first, that you need to plan it first। so at that time you are acting or you are working as a planner। इंडस्ट्री में जाओगे तो प्लानर एक अलग टीम होता है,
whose task is only to make the planning, वो planning करके आगे दे देते हैं, then the next task is done by next group of people. But making an academic project for you all student, अभी आप कैसा काम कर रहे हो, आप working as a planner, एक्टिंग एज अ प्लानर। अब प्लानिंग के अंदर तो बहुत कुछ चीजें होती है जो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिला है कि प्लानिंग करना है। सबसे पहली बात वी नीड टू डिसाइड क्या प्रोजेक्ट बनाना है, किस पर बनाना है। एट दैट टाइम यू आर गेटिंग द हेल्प फ्रॉम योर गाइड, वो आपको हेल्प करेगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग, इज इट फिजिबल, आर यू कंफर्टेबल to make that project within the given time span। जो आपको academic time period दिया हुआ है, before the final examination you have to complete your project, so that we need to decide at the early stage which is your plan। तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस किया जाता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपने सर जैसा दिशांत सर ने बताया था, फिजिबिलिटी स्टडी इट इज मस्ट। उसके अंदर बहुत सारा फिजिबिलिटी स्टडी होता है। मेजर फिजिबिलिटी जो डिस्कस किया जाता है, जो स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप ध्यान दो कि एक तो होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, दूसरा है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, और तीसरा है टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये तीन फिजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वंस यू गो फॉर हायर स्टडीज तो और बहुत सारी फिजिबिलिटीज जो है वो स्टडी करना होता है। वन विल बी द शेड्यूल फिजिबिलिटी है, टाइम फिजिबिलिटी है, सोशल एंड कल्चरल फिजिबिलिटी है। सो लिव फॉर दैट। So in your planning phase, study of all these different elements is must, where it helps that you people are comfortable, you people are feasible to make the project or not. So making this academic project, your first role is what you are acting as a planner. The second role, after when the planning is done, the decision is finalized, that you are there to make the project on so and so topic, with so and so language, with so and so platform, for so and so customer, etc. Once it is finalized, then you are proceeding to the next phase, where it is called a requirement analysis. As I told you that in industry, the analysis job is done by some another group of people whose task is to collect the data for the project. But here making the academic project, you all students are now acting as a role, or your role is what कि अब आप एनालिस्ट का काम करोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ प्लानर, नाउ यू आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट। अब आपको वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा रिलेटिव, एज आई टोल्ड कि आपने प्रोजेक्ट को डिसाइड कर लिया कि प्रोजेक्ट करना है, तो अब वो प्रोजेक्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए व्हाट वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन कि अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? यू सी दैट स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, डॉक्टर इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, पेशेंट इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, टीचर इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट सी कि आपको क्या चीज है जिसका इंफॉर्मेशन तुम्हें कलेक्ट करना है। तो द सेकंड रोल, द सेकंड एक्शन which Well, can you please mute yourself? yes Sohail Pathan. Okay, so now here when I'm saying that after completing the role of planner, when you are working and you are acting as a role of analyst, so lots of things that you need to do over here कि आपको information collect करना है। अब information collect करना बोले तो it will be collected from different sources, it will be collected using different techniques, वो तुम्हें सीखना होगा। और making this academic project आप ये सारी चीजें सीखोगे। So a technique that you all studied in your software engineering, that technique is called as fact finding technique। ये आपने theoretically पढ़ा हुआ है कि हमें information by using this technique हम लोग कलेक्ट करते हैं, but when really you are making the project,
तो अब आप वो टेक्निक का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग टेक्निक को यूज करेंगे, और वो टेक्निक को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। वाइल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो आपको जरूरत नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जो काम की चीजें वो भी मिल जाएगा। सो बाद में हमारा जो काम होता है तो सॉर्ट आउट करना है कि जो काम की चीजें है वी जस्ट कीप देम सेपरेट with all those information which are collected are not required. So अब यहाँ पे आपको जो theoretically सिखाया जाता है कि आपको information कलेक्ट करना है, तो different methods are which are applied for the different types of project. लेकिन जो तुम्हें एक theoretically जो method सिखाया गया है, what is that? Is nothing but the we can say application or use of fact finding technique. उसके अंदर 4 चीजें होती है। एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे टाइप का होता है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच इन ब्रीफ। तो बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन वी ऑल आर कलेक्टिंग द डेटा, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑब्जर्वेशन करके हम लोग को पूरा डेटा एक साथ मिल जाए, मे बी आउट ऑफ we can say all we are just collecting and we are just gathering some limited number of information by using observation method. Then उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, we will apply the record review method. एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू जो है we can just collect more data, you can collect more information. Record review क्या होता है, that maybe you all studied in software engineering, के collection of information from the physical documents, that is the record review. वहां से आपको डेटा मिलेगा। Again by using these two techniques it is not necessary कि we will collect all data, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं, that is called as इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइप है, by using this we are asking and we are collecting the information for making our academic project. और उसके बाद आपका होता है क्वेश्चनर्स, क्वेश्चनर्स के टाइप से कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल प्रिपेयर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, हाउ विल कलेक्ट द डेटा, हाउ विल गेट द आंसर्स ऑफ दैट ऑल क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ऑफ द पीपल हु आर द स्टेक होल्डर्स। ये सारी चीजें जो है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। सो दैट इज व्हाट यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिंग एज द रोल ऑफ एनालिस्ट, वेयर यू आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ये सेकंड रोल हो गया आपका। इंडस्ट्री में तुम देखोगे तो सेकंड रोल जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होने के बाद ऑल दैट इंफॉर्मेशन आर गिवन टू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल whose task is to make the designing. जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो अलग बंदे होते हैं, लेकिन अब मेकिंग दिस एकेडमिक प्रोजेक्ट आप स्टूडेंट हो, नाउ योर रोल चेंजेस, नाउ यू आर एक्टिंग, यू आर वर्किंग एज अ डिजाइनर। अब आपको डिजाइन का काम भी खुद ही करना है, जैसे आपने प्लानिंग का काम किया, एनालिसिस का काम किया, अब आपको डिजाइन का काम भी खुद ही करना है। अब डिजाइन बहुत सारे तरीके की होगी, यू आर अलोन दैट यू टू मेक द डिजाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, दैट इज अ वेब पेज डिजाइन होगा, आपका डेटाबेस डिजाइन होगा, आपका इंटरफेस डिजाइन होगा, and different many more types of design that you have to do it alone from yourself. तो बहुत सारी चीज हम लोग को खुद ही सीखने में आती है, बहुत सारी चीज जो है हम लोग खुद ही सीखते हैं फॉर मेकिंग दिस एकेडमिक प्रोजेक्ट। So when we are making the design, तो डिजाइन के अंदर we are using the different tools and techniques. By using them, हम लोग डिसाइड करते हैं कि what and how the project looks like, how it will be attractive to the customer, how the customer gets benefit from the website, from the particular project. तो ये सारी चीज हम लोग को क्या होती है कि डिजाइन पार्ट में आपको मिल जाए। But if after when the design is over, तो आप इंडस्ट्री में, अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल कि इंडस्ट्री में जाओगे तो डिजाइनर इज अ सेपरेट ग्रुप who are making the design and they are giving it to another group of people whose task is to make the coding and programming. But in your study, in this making this academic project, you yourself acting now as a programmer. अब आपका रोल आपस से चेंज हो गया है, अब आप प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हो, तो जो कुछ भी तुमने डिजाइन किया हुआ है, अब वो डिजाइन को मुझे क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। मुझे रियली बाय यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, here the language is not important, you may use any of the language based on your choice or whatever be the restriction given by the university, but the liberty is given to the student that whatever language you studied in first year, you studied in second year, you are studying in third year,
So based on that, where you are interested and the language where you are comfortable yourself, that this is easy and this is what you will make the project in this language. So you just choose the language yourself and you start coding. तो कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना नॉट सो डिफिकल्ट टास्क. नाउअडेज तुम देखोगे कि मार्केट के अंदर इंटरनेट पे बहुत सारे रेडी कोड आपको अवेलेबल होता है. यू ऑल कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट एंड देन मेक योर कोड. तो यहाँ पे आपका जो रोल होता है क्या हो गया, एज अ प्रोग्रामर होगा. आपका रोल चेंज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप. इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो. एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज फुल स्टैक डेवलप, फुल स्टैक डेवलप. वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स that the people has to do alone. वही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है there in this making this academic project. तो आपका रोल धीरे धीरे टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है. And then after making the coding, so you yourself acting as a tester. इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या प्रोजेक्ट टेस्टिंग करने का एक अलग टीम होता है जिनका रोल बहुत अलग होता है. टेस्टिंग बहुत सारी चीजों को करना होता है. एहसान सर ने बता दिया यूनिट टेस्टिंग एंड देन सिस्टम टेस्टिंग एंड देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो उन्होंने सर ने 2-3 टेस्टिंग बोला. अदरवाइज इंडस्ट्री में तुम देखोगे तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. सारी चीजों को टेस्टिंग करना होता है. अब टेस्टिंग क्यों करते हैं, आपका प्रोजेक्ट एरर नहीं देना चाहिए. आपका प्रोजेक्ट जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए. आप जो पर्पस के लिए आप प्रोजेक्ट बनाए हो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए. वो सारी चीजों को टेस्टिंग बोला जाता है और बहुत सारी चीजें टेस्टिंग के अंदर किया जाता है. दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग द टेस्टिंग वेरी मच इन ब्रीफ. सो अब आपका जो रोल है, आपने जो कुछ भी डिजाइन किया, आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने जो कुछ भी प्लानिंग किया एंड फाइनली आपने जो भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, आपका सारा का सारा ये प्रोसेस, आपका सारा का सारा ये जो स्टेप है, वेदर दिस ऑल स्टेप्स आर परफेक्ट, दिस ऑल प्रोसेसेस आर करेक्ट और नॉट, हम लोगों को टेस्टिंग करना होता है. ओके, अपॉन जस्ट कंप्लीटिंग द टेस्टिंग वी आर देयर टू डिक्लेयर दैट द प्रोजेक्ट जो तुमने बनाया नाउ इट इज वेल एंड गुड. तो प्रोजेक्ट जो रहता है वो क्या होता है हम लोग का, कि आपको फ्यूचर में जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे आपने सारे रूल खुद ही किए हो, तो इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई भी एक रोल में बिठाया जाएगा, कोई भी एक रोल का काम दिया जाएगा. ओके, अब उसके बाद करने के बाद मे बी यू आर गेटिंग मल्टीपल व्हाट वी कैन से जॉब्स देयर इन इंडस्ट्री. सो यहाँ पे एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाने का जो मेन इंटेंशन है कि ठीक है, फॉर योर व्हाट वी कैन से टीवाई पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट बनाना है विच इज वन ऑफ द टास्क टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, वो तो होगा. इन पैरेलल टू दैट वी आर रियली गेटिंग द इंडस्ट्री एक्सपोजर कि इंडस्ट्री में कैसे काम करना होता है. वो सारी चीज आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है. देयर वी आर नॉट ओनली कोडिंग, लेकिन साथ साथ आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी बताया जाता है कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है. व्हाट एवर यू आर डूइंग इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन डिफरेंट वेज. वो सारी डायग्राम आपको बताई जाती है कि ये डायग्राम जो ये चीज बताएगी. आपका प्रोग्रामिंग के लिए ये डायग्राम है, डिजाइनिंग के लिए ये डायग्राम है, एनालिसिस के लिए ये डायग्राम है, प्लानिंग के लिए ये डायग्राम है. सारे डायग्राम स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि व्हाट प्लानिंग यू आर डूइंग इट विल बी डॉक्यूमेंटेड, इट विल बी पिक्चोरियली रिप्रेजेंटेड. Okay, and finally whenever we are completing the documentation, your project coding is over, so we are trying to implement it at the customer side. तो स्टार्ट में जब प्रोजेक्ट गाइड के साथ आप डिस्कशंस करते हो तो आपको बताया जाता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे, इफ यू आर मेकिंग सम लाइव प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है कि रियली वी कम टू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. और फिर उसके साथ हम लोग लाइव प्रोजेक्ट को बनाते हैं. ओके, तो मैं सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट बनाए तो नॉट नेसेसरी का टीसीएस एंड विप्रो एंड इन्फोसिस बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आप करोगे. यू ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपके घर पे व्हाट योर पेरेंट्स आर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ जॉब दे आर हैविंग, तो ट्राई टू मेक द प्रोजेक्ट फॉर दैट बिजनेस. घर के बिजनेस को प्रोजेक्ट, घर का जो बिजनेस होता है उसी का प्रोजेक्ट बनाओ, उसी को आप इम्प्लीमेंट करो. तो एक लाइव प्रोजेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको खुद ही उसका रियल टाइम एक्सपोजर मिलेगा, रियल डेटा कलेक्ट मिलेगा, रियल इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो दैट रियली हेल्प यू कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर वेयर दे विल रियली यूज योर प्रोजेक्ट. ओके,
एंड देन आफ्टर वी कैन से व्हाट वी कैन से टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि जहाँ पे हम लोग को कस्टमर के मशीन पे इंस्टॉल करना होता है सो दैट द कस्टमर रियली यूज द प्रोडक्ट. So this all are the steps which you all studied in the software engineering. But यहाँ पे making academic project आपको यही हम लोग बता रहे हैं कि आपको कैसे turn होता है. Okay, how you are working, how you are acting, and what are the your roles for making the entire project where you are really acting and you are really working for different roles at different point of time. सबसे मेन जो होता है आपका ये टाइमलाइन होता है कि within that time period you have to finish and complete the project. That is very very important in industry. क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा so too many losses are there. Too many problems will be created in industry. So that I'm not explaining, पर यहाँ इतना ही समझ लो कि timeline is very important. कि आपको जो प्रोजेक्ट है you have to finish it within the given time period. Okay, okay, इतने शाम सर. Okay, thank you so much, sir, for your insights. So as we have discussed that the project helps students to understand the real world issue. You will be able to solve the real world problems, understand the real world problems. Although you are doing it at a single program level, addition of two number itself is a real world program where it assists the human in addition of two numbers, making a calculator, making a simple application for finding out roots of quadratic equation. So before I continue to my session, I also welcome Professor Shilpa Sarvaiya Madam, from whom I learn COBOL language, and because of your teaching, Madam, I was able to understand all the bugs and try to fix all the bugs in the latest programming languages, because I still remember that we used to write a long program for just addition of two numbers of around 30-35 lines were required in COBOL, and this can be done very easily in now in modern programming languages. So welcome, and I seek your permission to continue. Yes, sir. Yes, definitely. The session is very nice sessions. Continue, sir. No problem at all. Thank you, ma'am. With your permission. So again, we will be discussing about how projects helps the student in acquiring the skill that are required for the industry. First, they will be getting a real world touch where real world problem understanding and framing into the technical requirement is much needed, because the requirements will be always in non-technical terms. These non-technical requirements will be transformed into technical terms, and then it takes the shape of a program. So your project can be your entry ticket to embark a dream journey in the limitless world of IT. I always tell my students that whenever you are doing a project, this project will help you in understanding what or where you see yourself in next 5 years. Because the project will help you in getting the first step and understanding that in which area you can perform better, in which field of IT your skill set perfectly matches, and you can go ahead for your dream job. For example, web designing, web development, AI, ML, cloud computing, networking. There are so many areas where students can make their careers. Project will help you to make your career choice. It will help you to identify that your skill set matches and fits into this particular type of job role. From where to start? A $1 billion question. हर स्टूडेंट ये सोचेगा कि बाबा प्रोजेक्ट तो करना है, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? अब कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ करिकुलम्स में प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस. जहां पे नहीं है तो वहां पे क्या होगा? यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ. As Shai sir told you that you can try to understand your family business and transform your family business requirement into a viable IT solution and make an automated system for yourself. And who is the who can understand
your family based business better than you, because you are very much connected to your family business. और you try to find out कि आपके आसपास में कोई ऐसा है कि जिसका कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस में कुछ रिक्वायरमेंट होगा जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो. Even a small billing process can be automated. Even a small ticketing process can be automated. Even a small entry exit system can be automated. If you have a gym, sorry for the input. So if you have a gym near you, you can have an automatic door locking system where you can have a RFID based entry card. The membership will be renewed and it will be automatically connected with the RFID, and accordingly the entry exit process will be given. So like this, you can automate so many things around you. You can even automate your doorbell. If someone is arriving at your home, you can identify steps. उसके हाव भाव से आप देख सकते हो कि भाई दूध वाला आया है, पेपर डिलीवरी वाला आया है. You can use extensive use of image processing. Apply those image processing concepts and try to make an automatic doorbell system. वो आपको ये बताएगा कि दूध वाला आया है, वो आपको बताएगा कि पेपर डिलीवरी बॉय आया है, रायपुर वाले फूफा जी आए हैं. तो अलग अलग एप्लीकेशंस आप अपनी ओन से डेवलप कर सकते हो. One of a student develop a project where he is covering his entire rooftop with an automated system according to the rainfall. He has made that project for a cricket stadium. तो आप अपने ओन से बहुत आइडिया जनरेट कर सकते हो. डोंट वेट के आइडियाज कोई लाकर आपको देगा, आप अपने ओन से आइडिया जनरेट कीजिए. Your project is your own plan. Success is owned by you, failure is owned by you. क्योंकि वो आपके ही एक माइंड से निकला हुआ एक आइडिया है, और वो आइडिया है जिसको आपने खुद बनाया है. आपको समझ में आता है कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्राम अच्छा कर सकता हूँ. आपको पता है कि मुझे ये डेटाबेस अच्छा लगता है, मैंने उसको कनेक्ट किया. आपको लगता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनना चाहिए, आपको लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनना चाहिए, आपको लगता है कि वेब एप्लीकेशन बनना चाहिए, आपको लगता है कि क्लाउड एप्लीकेशन बनना चाहिए. ये सब कुछ आपका प्लान होता है. योर गाइड विल गो एज पर योर रिक्वायरमेंट. So a concept proposal need to be prepared. Why? Because ideas आपके माइंड में तो हजारों आते हैं, आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है, आप बहुत सारे सपने देखते हो, लेकिन अब मुझे आप कैसे समझाओगे कि आपने क्या सोचा है? And for this documentation is required. And therefore you need to prepare a concept proposal and submit to your project guide. Now, if you do not have a project in your syllabus, I request all my dear students to start thinking right from second year to make a project before you complete your graduation. If it is a part of your curriculum, it is the right way to transform your skill, whatever you have studied, into a very professional and excellent skill sets. लेकिन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी करिकुलर से या सर्कुलर या सिलेबस से नहीं मिली है, create your own opportunity. You can have an innovative idea because ideas की कोई limit नहीं है. Today we are living in the most advanced world of technology. 1000 साल पहले शायद कुछ नहीं होगा. कोई सोचता होगा कि यार मैं अपने दूर वाले काका जी से बात करूं तो उसको सोचना पड़ेगा कि यार कैसे बात करूंगा. बस वो अपने मन को समझा लिया करता था. लेकिन आज आपके मन में अगर बात आई है तो आप आपके भोपाल वाले चाचा जी को देख भी सकते हो, दिल्ली वाले मौसा जी से आप वीडियो कॉल पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कलकत्ता वाली मौसी से, और भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में जहां जहां आपके रिलेटिव्स हैं इन सबको इकट्ठा कॉन्फ्रेंस कॉल में देख सकते हो. कुछ दिन बाद फील भी कर सकोगे. You will get a 3D effect. So today you are living into the one of the most innovative world. और ये अभी खत्म नहीं हुआ है because for humans enough is never enough.
and there is always a room for progress. And where the idea will come? Idea will come from you, because you are the future of the technology. You are the driving force of the technology. कल आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, आपके कंधों पे वो जिम्मेदारी होगी, जिसकी वजह से हम आज पूरे पेंडेमिक में जो टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और हमारे बहुत सारे काम जो टेक्नोलॉजी के बिगैर रुक गए होते, ये अगर नहीं रुके हैं, तो द क्रेडिट गोज टू all the IT engineers, and you will be the part of the IT industry in the future. So innovation should come from you. और ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हो, हमारे मन में हजारों थॉट्स आते हैं, बहुत सारी आइडियाज आती है. You only need to transform that ideas into reality. Transform those ideas into reality. Then you can either have product re-engineering. Existing project है, आप देखिए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या नया कर सकते हो. इफ यू हैव अ टी वेंडिंग मशीन, ट्राई टू ऐड इनोवेशन इन दैट टी वेंडिंग मशीन. इफ यू हैव अ डोरवेल, ट्राई टू ऐड इनोवेशन इन दैट डोरवेल. इफ यू हैव अ कैमरा, ट्राई टू हैव सम इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. इट इज कॉल्ड एज री इंजीनियरिंग. आपके जितने भी लेटेस्ट मोबाइल फोन होते हैं, वेदर इट इज आईफोन 11, 12, 13 या 21, 25, 35, जितना भी आएगा, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ री इंजीनियरिंग. In iPhone 11 is a result of re-engineering in iPhone 10. iPhone 12 is a re-engineered product of iPhone 12, like this. तो एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ नया कर लिया और उसको फिर से रीलॉन्च किया, प्रोडक्ट री-इंजीनियरिंग. कुछ प्रोडक्ट मेंटेनेंस में खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, बट जाने से पहले वो प्रोडक्ट एक नए प्रोडक्ट का आइडिया देके जाता है, क्योंकि उसके जो डिफेक्ट्स है, उसके जो लिमिटेशंस है, दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि इसका नेक्स्ट फ्यूचर क्या हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट थिंकिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज. देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन टाइप शुड बी रियल वर्ल्ड, जो इंडस्ट्री में यूजफुल हो. मैं हमेशा कहता हूं कि अ प्रोजेक्ट शुड बी वायबल, इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेबल, इट शुड बी एप्लीकेबल. एप्लीकेबल इन द सेंस, आपने कुछ बनाया है, कहीं ना कहीं तो उसका यूज होना चाहिए, कहीं तो वो यूज होना चाहिए, भले एक स्मॉल पार्ट. फॉर एग्जांपल, यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर डेफ एंड डम पीपल्स और द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स. भले ही आपका एक बड़े सेक्टर को आपने या बड़े ग्रुप को आपने टारगेट नहीं किया है, लेकिन आपका टारगेट छोटा है लेकिन यूजफुल जरूर है. Then what is the selection stage? स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है. रिसर्च ऑलवेज बिगिन विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कोई भी प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है. ट्राई टू फॉर्मुलेट. मैंने सिर्फ आपसे कहा कि राइट अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जब तक मैं आपसे ये ना कहूं कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, आपके माइंड में ये क्लियर नहीं होगा कि करना क्या है. अगर मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि भाई प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं बहुत ही अनसर्टन वे में आपसे कह रहा हूँ कि कुछ करना है. जब तक आप होटल में ऑर्डर नहीं करते हो, आपको क्या खाना है, वेटर आपको सर्व नहीं करता है. ऐसे ही आपके माइंड में आइडियाज बहुत होंगे, आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, आपको बहुत सारे डेटाबेस आते होंगे, बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन में आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपको एक चीज फिक्स करनी होगी. आप टिकट काउंटर में जाके ये नहीं बोल सकते कि कोई अच्छा डेस्टिनेशन सजेस्ट कर. हमारे यहाँ मुंबई में तो उसको लाइन से निकाल देंगे. अमरावती में हो सकता है कि बहुत फुर्सत में वो बैठा होगा, तो वो बोलेगा कि मैडम कोई अच्छा सा डेस्टिनेशन बताइए, मैं कहाँ जाऊँ. लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको लाइन से निकाल दिया जाएगा. हम टिकट काउंटर पे जाकर उसको ये नहीं बोलते कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सजेस्ट कीजिए. जब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं तो हमारे माइंड में एक डेस्टिनेशन फिक्स होता है, टारगेट फिक्स होता है. ऐसे ही हमें प्रोजेक्ट में क्या करना है, टॉपिक फिक्स होना चाहिए, एंड इट कम्स विथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देन submit the proposal to your project guide. Generally, the project guide is the subject teacher who has been assigned for the project or the head of the department. Once you get the approval के बाद फिर आप उसको एक स्टार्ट पे ले सकते हो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा. फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे फेजेस आएंगे. Why I am not explaining much about how to do the project, because
It depends upon the type of project you handle. Embedded project will have a different life cycle. Web project will have a different style of working. Again, you can have web project developed in different styles and different frameworks. तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है. आगे का रास्ता ऐसा है कि आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना होगा. अगर आप क्लाउड पे प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्लाउड इज हैविंग टोटल डिफरेंट अप्रोच इन मेकिंग द प्रोजेक्ट्स. तो अलग अलग प्रोजेक्ट को आप अलग अलग अप्रोच में हैंडल करोगे. तो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट स्टेज है, ये प्रोजेक्ट स्टेज ये डिसाइड करता है कि आपको करना क्या है और आप इसमें क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो. एंड अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट स्टेप हो गए, जैसे शाहिद सर ने बताया कि राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइनिंग, कोडिंग, implementation, testing, and then implementation on the client side. All these things will be done only after finalizing the project topic. Softwares, you can use any software that is of your that is as per the requirement or as per the availability or as per the interest you have. Then how to search for new ideas? Conduct a search and collect relevant material. You can anytime go to internet. Whenever an idea clicks in your mind, go to internet, search for the relevant topic. Try to first find out the projects that are done by different people on the same topic. Try to find out something new. Filter the idea based on the industry trend, what is going in the industry. Then your area of interest. आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या डेटाबेस है, या फिर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, क्लाउड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, एम्बेडेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आईओटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो. आपका स्किल सेट में आपको क्या आता है. देखो, जितना आपको स्किल सेट आता है उसमें अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो. नो डाउट you are intelligent enough to acquire new skill sets, you are intelligent enough to develop new subjects. But as far as a project is concerned, my first opinion is that go for the language, go for the skill set that you already have or that you are already comfortable with. या फिर ऐसा स्किल सेट जो अब तक मार्केट में नहीं है या अब तक आपने सीखा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक मौका दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का. इस बेसिस पे आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कीजिए. देन चूज अ गुड कॉज फॉर अ प्रोजेक्ट. मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमेशा से प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन हो, जिसका कोई एप्लीकेशन हो, जो कहीं पे यूज हो. आप रोवर बना सकते हो लेकिन मार्स पे लैंड होना चाहिए. फेल होगा ये अलग बात है, बट कहीं ना कहीं यूजफुल होना चाहिए. Stay focused. Why I am telling you this statement? Because when you finalize the project, at the same time you have two things कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है. For example, when you buy a ticket for a journey, अगर आपने टिकट बुक करवाया है मुंबई का, तो आपको मुंबई जाना है, कोलकाता नहीं जाना है. It is one thing, it is clear. Whenever we define a project statement, the scope and boundaries automatically comes with the statement. Define your scope at the beginning. ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है. मेरे प्रोजेक्ट में कैलकुलेटर भी है, मेरे प्रोजेक्ट में ये भी है, मेरे प्रोजेक्ट में बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, मेरे प्रोजेक्ट में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, मेरे प्रोजेक्ट में होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी है. ऑल इन वन. यू कैनॉट हैव अ प्रोजेक्ट विद ऑल इन वन. While developing an application, you need to be specific about the requirements. Then make it applicable. A project must be demonstrable. आपने बहुत सारा कोडिंग किया लेकिन आउटपुट नहीं है. आप कभी ऐसे एटीएम में जाते हो जिसमें प्रोसेसिंग बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं निकलता है. ऐसी टी वेंडिंग मशीन से आप चाय बनाओगे कि जिसमें बहुत सारा काम होता है, आधा घंटा लगेगा, प्रोसेस बनेगा, लेकिन चाय नहीं निकलेगी. तो कैन यू हैव अ टी वेंडिंग मशीन दैट वर्क्स अ लॉट but cannot deliver a cup of tea? Definitely not. Again,
जैसे सर ने बताया कि प्रेजेंटेशन एंड प्लानिंग आर एसेंशियल, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अलोन। आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको डिजाइन से बताना पड़ेगा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, आपके माइंड में क्या प्लान है, आप डेटाबेस कैसे अरेंज करते हो, कैसे बताओगे? ईआरडी से, एंटिटी रिलेशन डायग्राम से। आपकी क्लासेस में क्या रिलेशन है, कौन सा क्लास कौन सा ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, क्लास डायग्राम से बताओगे। कौन से क्लासेस के अंदर क्या है, बिकॉज यू कैन क्रिएट अ सिंपल क्लास विथ नो एलिमेंट्स एंड अ कॉम्प्लेक्स क्लास विथ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके माइंड में क्या है, आपके टेस्टिंग में क्या पाथ है, आपके टेस्टिंग के क्या स्टेप्स हैं, आप बताओगे ना। यू कांट टेस्ट रेड चिली इन अ कप ऑफ टी। प्रोग्राम टेस्ट करते वक्त एडिशन ऑफ टू नंबर में एडिशन ऑफ टू नंबर ही देखोगे ना, ये थोड़ी बोलोगे कि इट डज नॉट स्टार्ट विथ @, इट डज नॉट कंटेन अ डोमेन नेम। वो तो ईमेल आईडी का चेकिंग है। तो अगर आपको इडली टेस्ट करना है तो इडली और समोसे के टेस्टिंग में दोनों में फर्क है। चाय में आप रेड चिली कम है ये नहीं बोलोगे, उसका रीजन ये है कि चाय के टेस्टिंग के क्वालिटीज और पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, और जब आप इडली टेस्ट करोगे तो उसकी क्वालिटीज कुछ और होती है, समोसे का टेक्सचर कुछ और होगा। तो आप, आपके माइंड में क्या चल रहा है और दूसरे प्रोग्रामर्स को या दूसरे टीम मेंबर्स को आप कैसे कन्वे करोगे। सो फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड प्लानिंग आर एसेंशियल बिकॉज यू आर नॉट अलोन, यू नीड टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एट मल्टीपल स्टेजेस। जैसे सर ने बताया कि रिक्वायरमेंट लेने वाली टीम कोई और होती है, उसको एनालाइज करने वाली टीम कोई और होती है, फिर उसको डिजाइन करने वाली टीम कोई और होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली टीम कोई और होती है। यहाँ पे आप सब कुछ अकेले कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका प्रेजेंटेशन आपको आपके प्रोजेक्ट गाइड के सामने देना होगा, आपका प्रेजेंटेशन आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने देना होगा, आपका प्रेजेंटेशन आपको दूसरे कुछ लोगों के आगे देना होगा। इसके लिए आपके माइंड में क्या है ये आप कैसे ड्रॉ करके दिखाओगे, आपके माइंड में क्या है ये आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे। इसके लिए बेस्ट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी डायग्राम्स आपने देखे हैं, दीज डायग्राम्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। आई थिंक इस पे तो शाहिद सर ने ऑलरेडी कमेंट्स दिए ही है। विल सिंस you are a combination of three things: the presentation, user experience, UX, the technology that is working behind, and the business domain. आपने वेबसाइट बहुत अच्छी डिजाइन की लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है, या फिर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, डिजाइन बहुत अच्छा किया है, लेकिन बिजनेस प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है या बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इट इज ऑफ नो यूज। यू नीड टू हैव अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट, द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एंड द यूजर एक्सपीरियंस। व्हाई? बच्चों को गेम में इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए। एक बैंकिंग एप्लीकेशन यूजर को बैंक की फैसिलिटी वो मिलना चाहिए जैसे वो ब्रांच में जाके बैंकिंग कर सकता है। आप उसको एनिमेशन दिखा के बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाओगे और उसको बोलोगे कि आपका बैंकिंग की जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इट इज ऑफ नो यूज। आप पेटीएम या व्हाट्सएप इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपको सबसे ज्यादा उसमें यूज होता है। बैकग्राउंड में व्हाट्सएप कैसे यूज होता है या कौन इसको चलाता है, इसमें कोई किसी की रुचि या किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आप एज अ एंड यूजर जब प्रोडक्ट में ये देखते हो तो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट जब दूसरे लोग देखेंगे तो वो भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इट मस्ट परफॉर्म द बिजनेस, and of course the business should be well supported by the technical requirement and with a very good user experience. And therefore you are here in the middle with a perfect combination of user experience, with a perfect combination of all the technological implementation and all the business requirements that were earlier discussed that you need to incorporate in your project. What are the top 10 technologies in software development? You can develop projects in AI, ML, blockchain, microservices, AR, VR. AR, VR stands for augmented reality, virtual reality, big data analytics, then cyber security, web applications, and lot many applications can be created as per the today's trend. AI and ML applications are on the over the top. Now, project development, you are free to use any language. As far as language is concerned, it completely depends on what type of application you select, what type of project have you selected. For example, AI based applications,
You can use any language. You can use Python. You can use any other language that is of your choice. Then you need to have a T-shaped skills. Don't just be a programmer. You need to be a very good analyst, where you need to have an in-depth knowledge of analysis on also. This is called as a T-shaped skill. You need to be a very good analyst, where you can write executable documents, where you can write requirement engineering, and where you can write your own user manual as well. क्योंकि आप आपके प्रोजेक्ट के खुद जन्मदाता हो, कर्मदाता हो. आपका प्रोजेक्ट सक्सेस भी आप ही की वजह से होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल भी आप ही की वजह से होगा. And therefore you need to have a broader skill set with a deeper knowledge. Then you need to be a very good programmer, where you need to write the program as well as design the system. जो काम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट करते हैं वो काम आपको करना है, और जो काम प्रोग्रामर करता है वो भी आप ही को करना है. So you need to write the automated test. Generally automated test लिखने वाले कोई और होते हैं, प्रोग्राम लिखने वाला कोई और होता है, टेस्ट करने वाला कोई और होता है. यहाँ पे सारे काम आप ही को करने हैं. And therefore the horizontal broad area of skill set you need to adopt. And second, you need to have the in-depth of all the skills that are required. Then from front-end perspective, most of the students goes for web development, web languages, web projects. So start learning HTML, CSS, JavaScript. Try to understand how browser works and debug front-end in browser. Learn about the responsive UI. What is the responsive UI? Mobile responsiveness refers to if the website is designed for, if the website is working on laptop or desktop, then it must have a horizontal look. Whereas for mobile phone, it should have a vertical look. So it should adopt the screen size accordingly, and the layout should be adjusted accordingly. This is called as the mobile responsiveness websites. You can even learn JavaScript, MVC frameworks like AngularJS and others, which are commonly used in today's web development platform. Then some popular languages according to the PYP. Sorry, am I audible to everyone clearly? So every year there is a survey for the most popular programming languages. So today Python is having almost 30% of the total share, where Java is on second. Up to 2018, Java was the top language. It really is a matter of pride for me that I started my programming in C language, and C is still the 5th popular language even today. So the journey of C, right from its inception up to today, the journey of C, and still it is relevant today, is really remarkable. Then if you see in India, Python is again having 31% of share in Java, followed by Java 23, whereas C#, C++, PHP, they are having a mix of around 20% of the share. So every year the language trend changes, and accordingly you need to keep an up to date about this. So Toybe is another agency that makes the index for the most popular languages based on the search made on internet about various languages. So according to Toybe index in March 2022, the most famous programming language is C, according to the search made by the people on Google. Okay, so Python has gained an 11%, and Java has come down with 11% to the 3rd position. So again, the worldwide top IDEs, the environment that you need to develop your project, integrated development environment. Visual Studio, of course, is over the top, followed by Eclipse, Visual Studio Code, then Android Studio, PyCharm, IntelliJ, NetBeans, Sublime, Xcode, and then followed by Atom. Then top database index, Oracle is, of course, right from the beginning is on the top with 30% of the share. MySQL, SQL Server, Microsoft Access, MongoDB is gaining a little popularity nowadays. PostgreSQL, Firebase, Splunk, Electricity Search, and Escape. We would like to listen from the students from Vidyabharti Mahavidyala. The session is open for you. Feel free to ask any question related to project or academics.
You can even ask your faculties to ask your on your behalf. But I would really appreciate if you directly ask your questions to us, because we are not new to us. We are your own. This is the first collaboration we are doing with Vidyabharti Mahavidyalaya. This is the beginning, and in future also we will be collaborating with such other programs. Hello, I am audible. Yes, madam. Sir, the session was very informative. And I am glad to see you, sir, on this position. I am very glad to see you. Please don't call me sir. I'm your student, madam. No sir, but I am happy now today. मतलब इसलिए मैंने आपको सर बोला है कि मुझे बहुत नहीं अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज आपको नहीं 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 आप मुझे ये पोजीशन पे सर मत देखकर बोलिए सर मत बोलिए because I have learned my first programming language from you. तो मैं तो नहीं सुन सकता हूँ कि आप मुझे सर बोल रहे हो. I am your student और मैं जैसे पहले था आज भी आपके लिए वैसा ही स्टूडेंट हूँ. Even me and Imran both. Yes, yes, it's my pleasure. Hello, from student side. Hello, student. Ask any question. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को क्योंकि सेशंस बहुत ही बढ़िया था. मतलब नहीं अगर बढ़िया हो है तो फिर तो क्वेश्चन आने ही चाहिए. अगर मैंने अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाया है तो फिर ये मेरा सेशन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पाया हूँ. आपका जो इतना इम्पोर्टेंट टाइम है जो मैंने आपसे लिया है इसको मैं जस्टिस नहीं कर पाया हूँ. ऐसे नहीं है. स्टूडेंट्स हेलो. तेजश्री, अपर्णा, केतन, लगता है क्लास में आकर ही पूछना पड़ेगा तुम लोगों से. और हमारे हाँ एमएससी सेकेंड ईयर को है सर प्रोजेक्ट. अभी एक्चुअली तो सारे बच्चों का प्रोजेक्ट नियर टू हाँ फिनिश जी. होगा. तो मैम ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जब मतलब वी कैन कंडक्ट सच टाइप ऑफ सेशन एट द अर्ली स्टेज सो दैट क्वेश्चन वहां से Yes sir, काम yes करना sir, डिसाइड. definitely. हाँ हाँ है कि yes नहीं yes sir, definitely. Hello, sir. I'm audible. यस सर. सर सिंपल से कैलकुलेटर बनाने के लिए भी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है सिंपल वाली जो यूज करके कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं? जावा, उसमें ना सी. हाँ the libraries are mostly available on the internet. So today development is almost we are living in a world of integration. Most of the code are already ready. GitHub बनाकर रखा है, repositories बना के रखे हैं. So even if you want to integrate a payment gateway system into your project, you don't need to write the code from scratch. Or students start trying to make a login form and spend 2-3 days in just making the login form. There is no need to make login form. यहाँ तक कि आपका पूरा प्रोजेक्ट वेबसाइट तो आप एक दिन में बना सकते हो. wix.com है या weebly.com है, आप आराम से अपना वेबसाइट बना सकते हो. फिर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स है जिसको आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करके आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो. तो टुडे डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट रियली डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम पहले ये कहते थे कि अगर आपको HTML आता तो ही आप वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो. अब ऐसा कुछ नहीं रहा है. शॉपिफाई या फिर magento.com में आप अपना ई-कॉमर्स का वेबसाइट हार्डली 2 घंटे में बना सकते हो विथ ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स. तो अभी हम वो स्टेज से बहुत आगे चले गए हैं कि जहां पे हम प्रोजेक्ट को स्क्रैच से डेवलप करते हैं या फिर हम प्रोजेक्ट्स को कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन लिखना शुरू करते हैं. ऑल द थिंग्स आर रेडी. Python, why Python is so popular? Because it provides everything. आपको अगर
पूरा एक डेटा शीट एनालाइज करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेटा सेट पूरा रीड करना है, उसके ऊपर जो भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है. Earlier we used to write the same code in C language. First read the data line by line, then store it in an array, then try to process it, then try to present it in cout statement. ऐसा कुछ नहीं है. Everything अभी आपको डेटा रीड करके प्लॉट ड्रॉ करना है, Python will take hardly 5 to 7 lines of code. So I think programming language ऐसा कोई restriction रहा ही नहीं है अभी, और किसी को भी सीखने के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है. इफ यू नो द कंसेप्ट, सिंपली गो टू इंटरनेट, find out which libraries are available for the concept, and directly you can implement in your project or even in your small programs. I hope you got your answer, sir. Thank you, sir. First of all, thank you, Sham sir, and all, so for this wonderful and informative webinar. Many different. मैं शाम सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने फील्ड में माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने टीचिंग लाइन पसंद किया. अब ये तो थोड़ा सा ना, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड द स्कोप. यस सर, लेकिन मैं इसलिए पूछा वेबिनार में कि सारे लोग जान पाए. इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि why I'm into teaching. Reasons are multiple. So why I'm in teaching, इसके बहुत सारे reason है. Because earlier I started as a software engineer, then I started working as a Java developer. Then I am currently also I am working with a software company as a head of innovation at Cluster Technologies. So I have industry linkages even today, but I was very much into teaching, and when I started my teaching career, I got an opportunity to teach in around 4 or 5 colleges in Mumbai. So today I am associated with around 13 colleges in Mumbai. I am part of university syllabus committee. I am also the board of study member. So these things put a lot of engagement on me, and a lot of driving force was these responsibilities, and I could not take myself out of teaching. Otherwise, in the initial stage, I started teaching just as a part-time job. So no specific reason. It was an accidental choice by me. Whether it is right or wrong, I don't know, because I firmly believe in destiny. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, I have a question. Yes, please. After graduation, what should we want to do? MBIT or MSc? See, both are having good career options. MBA in IT as well as MSc in IT. It only depends upon whether you want to go into core IT or you want to go for IT management. If you want to go for IT management, MBA in IT is better. But remember one thing: any MBA, first year will be same. The common base subjects will same for all the students. The specialization will go only on semester 2, semester 3, and semester 4. So if you want to go into core IT, go for MSc IT or MCA. Or if you want to go into IT management at the manager level, then in that case you can go for MBA in IT. Choice is yours. And what I feel is any master degree after getting the base degree of IT will help you in just getting the higher position. Otherwise, everyone will start from the junior programming level only, or a junior network engineer. So the first job can be taken only on the can be anytime taken on the basis of your graduation degree. Whereas in future, after 4 or 5 years, when you need a promotion or when you are trying for a higher position, for that you definitely require a master degree. Thank you, sir.
So if no questions, I would like to request the faculty members from Vidyabharti Mahavidyala to please give your concluding remarks. And take the program Hello? towards the end. Yes, madam. Yes, sir. Hello, am I audible, sir? Yes, madam. Thank you so much, sir. Your speech is so much informative. You taught very well, both of you, Shahid sir and you. This knowledge will really fruitful for our student. Thank you for organizing such type of event, and we hope we will further make this type of events. Thank you Definitely, so we would much. like to come to the college physically, and we would like to invite you also to our college. Inshallah, Yes, sir. definitely, sir. We will try. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. So with this, we'll conclude the session for the day. Thank you, Yes, everyone. Thank you for your patience listening. इतना आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया. अरे नहीं. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.